Good morning, all. Welcome for the class. I'm sorry for the delay. Okay. Here we discuss about playing with numbers, right? You are aware that in playing with numbers, we have learned many concepts till now about different types of numbers like prime and composite numbers, right? Then we learned about the factors and divisors. Okay. Then what more? We learned the test of divisibility. Okay. Then we learned the factor tree, how to prime factorization of a number using the factor tree and using the vertical method, right? After that, we went ahead with finding HCF and LCM of numbers. So here we learned more about these properties of number when we find HCF and LCM, or about their common factors. So it will be a small session here, okay, where I will be discussing about our recap of previous times as well as some different properties. Maybe very simple to understand, but you have to remember it for a longer time because its application will always be there, in high level concepts. And generally what happens, by heart the sum, you practice the sum, you learn the method, but then you forget many concepts. So these are the concepts that you remember. It will be helpful for you to find out, the HCF or the common factor or its application in real life situation, okay, with your mental work. And you know that I always tell you that we always focus on mental work. If you learn to focus it on your mental math, then not pen and paper. Because in your real life, if you will go to office or if you will work, nobody is going to ask you what is HCF and LCM, but you have to apply it practically, isn't it? And when the practical application, we always want to, we don't sit with pen and paper all the time. So we have to think in a different way. We have to use that concept in our real life. So that will help you really if you take it positively and if you learn the concept very well in your mind. Fine. So quick recap of our primers and composite numbers, and then we move on to the different properties. What is it? Let's see. I taught you about prime factors or prime numbers as a number which has two factors, right? From my side, the voice clarity is proper, perfect, no issues for the net. Some issues from your side. Maybe it's, your internet will not be perfect, so you find me as a blur or my sound as a problem. Issue now. Okay, now I think perfect. Okay, so we discuss here about different properties of numbers, whereas when we have already dealt with prime numbers and composite numbers, right? And we learn more about them. What I said, if nobody could hear it, I just repeat it for you. What I discuss here today are different properties of number, and actually what is the use of these properties. Basically, these concepts are applicable in real life, knowingly or unknowingly. People are using it in daily life, like you are arranging a party, kind of food. You decide the quota, the menu. Okay, you decide the menu. Like suppose you have to decide the sweets, right? But you have to decide the number of people coming, and the minimum, what do you say, minimum level of quantity for each person, right? We assume that okay, at least two per a person will take two sweets, pieces of sweets, or three pieces of sweets, and accordingly you have to decide. So what are you doing? Your concept is about LCM, right? You're talking about least common multiple, that okay, people are going to take, or you're thinking of common factors. So these are all applications. Suppose I have a string, I have to cut it into the pieces of equal length. Okay, so when I talk about cutting it and using it, suppose I want to make Rakhi. Raksha Bandhan is coming. I've decided, okay, I want to do Rakhi business. Okay, so naturally I have to decide the length of the Rakhi thread first, right? Once I decide the length of Rakhi thread, and when I go to buy the thread string, isn't it? So I have to cut into the pieces. Now I have to cut into the pieces so that the thread doesn't get wasted. So that maximum length I have to decide so that my string doesn't get wasted. What I'm talking about? I'm talking about HCF. Okay, so if you're using some decorative material, right? You have limited material, but you want to utilize it. So you have to
यूटिलाइज इट इन सच अ वे, पहले तो आप डिसाइड करोगे अच्छा इतनी राखी बन रही है, इतना मटेरियल है, अच्छा तो एक एक पीस पे मैं कितने यूज कर सकती हूँ, सो दैट आई कैन यूटिलाइज देम एंड आई कैन हैव रियल how to use it at the maximum level. तो ये मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, ये मैंने HCF का लिया. Okay, so these are the things which you use practically. And the problems they would say, but I want you to learn the concept first. So once you have the concept clarity, it will be clear in your mind, and anytime somebody asks you such question, you can apply it. Fine. So let's see how to do it. Just one second before we start. Absolutely no issues from my side for this sound. So please manage it. Okay. Now, when we talk about prime numbers, prime numbers are the one which has two factors, one and itself, right? When we talk about composite numbers, it has more than two factors. Remember, the greater than sign means more than two factors. That's fine. Okay. And you know that one is neither prime nor composite. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है. Then when we talk about HCF, that is highest. मैं थोड़ा सा recap दे रही हूँ ये words का, ताकि जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आप ध्यान से समझ लो. बहुत easy concept है, but बच्चे याद नहीं रखते हैं. That's my problem, and that's why I want you to focus. And I'm seeing that you people are good ones. You really understand what I'm saying, and you listen to me. So I'm happy with that. That those who are attending, they are completely with me. They will listen to me, and they will always remember this concept. Okay, HCF is what? Highest common factor. So I'm going to discuss something about these factors mainly. Okay, and even the multiples and least common multiple, that is LCM, least common multiple. Okay, now let's see some examples about these numbers. Okay, I'm taking a very simple number, say 20, and I'm saying 25. Okay, very simple numbers are there. Two numbers are there, 20 and 25. No, you have to understand. Again, I'm repeating where I write or when I explain. Even in my class, I don't allow anyone to write, even in regular class. क्योंकि हम मल्टीटास्किंग में नहीं बिलीव करते. जब हमारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको लिखना नहीं होता है. ओके, एक साथ दो चीजें करेंगे हमारा 100% नहीं होगा. ओके, सो सी टू इट दैट यू पे अटेंशन. ये दिमाग में रखने वाली चीजें सारी. एक बार आपके दिमाग में रह गया ना, फिर कोई भी कहीं पे भी आपको यूज करने कहेगा आप कर सकते हैं. ओके, तो हम बात करें थे नंबर्स की 20 and 25 की. मे आई से 5 is a factor of both the numbers. Yes. Do you agree with this? 5 is factor of both the numbers. Yes? Agree? Okay. Now listen. If I take 20 plus 25, what do I get? 45. What do you say about 45? Is 5 a factor of 45 also? Yes. So, yes, 5 is a factor. Okay. If I take bigger number minus smaller number, 25 minus 20. Oh, 5 itself. Yes, then 5 is a factor. So that means I was given the two numbers and what I saw. Okay, now I'm not going to conclude, you're going to conclude. Let's take one more example, say 21 and 36. Okay, 21 and 36. Okay, both are divisible by 3. So I mean 3 is a factor. I'm just writing in a short form. 3 is a factor of 21. 2 plus 1, 3. 36, 3 plus 6, 9. Do you agree? 3 is a factor of 21 and 36. Let's add them. What are you getting? 21 plus 36. 57. Is 57 divisible by 3 or is 3 a factor of 57? Let's check it. 57. 5 plus 7. 12.
So you know that 12 is divisible by 3. So yes, 57 is also divisible by 3. 19 3s are 57. Got it? Now let's check it. Subtraction. 36 minus 21. What is it? 6 minus 1. 5. 15. Yes, absolutely. You know that 15 is divisible by 3. That means 3 is also factor. So looking at this two example, could you generalize something? Yes, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको स्टेटमेंट? आपके दिमाग में कुछ सेट हो रहा है? जब मैं आपको दो नंबर्स दे रही हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं और हमें पता है कि उसका एक फैक्टर है जो यहाँ पे 5 है. सो इफ आई एडेड द नंबर, तो जो आंसर आया उसका भी 5 फैक्टर है. जब हमने सब्ट्रैक्ट किया और जो आंसर आया उसका भी फैक्टर 5 है. सिमिलरली हियर, सो व्हाट डू यू कंक्लूड व्हेन यू आर गिवन विद टू नंबर्स? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं जो लाइफ में आती है ना, वो एक्सपीरियंस काम आता है. आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा को बहुत सारी चीजें पता चलती, तो सब कुछ हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. ओके, अब जो मैथ्स में पढ़ा रही हूँ, तो ये सिर्फ मैथ्स के लिए इम्प्लीकेबल नहीं है, इम्प्लीकेशन नहीं है, ये जनरल है. हम सीखते कैसे हैं? एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है? एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि कैसे चीजों को जनरलाइज किया जाता है. आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे कि अच्छा, हाँ, इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, सेकेंड टाइम आपसे होगा, अच्छा इस सिचुएशन में मेरे साथ ये हुआ था, तो थर्ड टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो? यस, यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो, ओ ऐसे होने वाला है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर मम्मा स्कोल्डिंग, it could be any worse situation, it may be rain, anything. You know that, okay, I want to be wet in the rain and deliberately will try. अच्छा, आज बारिश आने वाली है, मम्मा is sending me out, चलो ठीक है, मुझे भीगने का फुल मूड है, and you deliberately forget the umbrella. That is also some experience because you learn it from your experience. Fine. तो ये जो चीजें हैं, इसी को मैथ्स में कहा जाता है फॉर्मूला. ओके, जनरली जैसे आप अभी हर क्लास में जाओगे, आप सीखोगे एक वर्ड फॉर्मूला. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी है. सारे बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, ठीक है, पर ये फॉर्मूला क्या है? जनरलाइजेशन. तो आप कोई भी चीज को जब ध्यान से देखोगे ना, जब वो एक से ज्यादा बार रिपीट होगी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन. दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला. फाइन. तो हमने यहाँ पे क्या जनरलाइज किया कि जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं और उसका कोई एक फैक्टर होता है, तो उसका जो सम है, जो सम आएगा, मींस इफ वी ऐड अप द टू नंबर्स, देन वो जो गिवन नंबर है वो सम का भी फैक्टर होगा और इनका जो डिफरेंस है उसका भी वो फैक्टर होगा ही होगा. अंडरस्टूड? आई होप दैट्स क्लियर टू यू. ओके, बहुत सिंपल चीज है, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन हायर क्लासेस इन लर्निंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. जब वहां पे जनरलाइजेशन होता है ना, तब ये बच्चे नहीं सोच पाते हैं. इसीलिए मैंने तो आपको कहा था. और दूसरा एक चीज जो मैंने कहा था, इवन एंड ऑड वाला कॉन्सेप्ट. फाइन, तो वो भी याद रखिएगा. वो मैं क्या है सिर्फ बता देती हूँ एक बार फिर से, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. सपोज आई से 100. ओके, may I say 4 is a factor of 100? May I say 5 is a factor of 100? Okay, then 4 5s are 20 is also a factor of 100. When two factors are there, its product is also a factor of a bigger number. समझ में आ रहा है? जब एक नंबर आपके पास दिया है और आपके पास उसके दो फैक्टर्स हैं, तो उसका प्रोडक्ट भी जो आपके नंबर का फैक्टर होगा. यहाँ पे प्रोडक्ट है और जब दो नंबर और एक फैक्टर है, तब क्या है? उसका सम है और उसका डिफरेंस है. Fine, this is clear to you. Okay, so here along with this HCF and LCM, okay, अब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? आप कोई जवाब नहीं दोगे, मैं 4 यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ और आपको ऑब्जर्व करना है. फाइन, जब मैं पूछूंगी तभी आपको आंसर 1 2 3 4 मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ लिखना है, एक एक करके नहीं लिखना है. 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर. फाइन, या तो एक काम करते हैं हम लोग, ABCD ले लेते हैं, ठीक है? A का आंसर, B का आंसर, C का आंसर, D का आंसर, पर एक साथ. तो पहले सुनेंगे, मतलब पहले आप देखोगे कि मैं एग्जाम्पल क्या लिख रही हूँ, उसके बाद आप टाइप करोगे, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगी मैं. अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं बिना सॉल्व किए. हाँ, आपको पेन पेपर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर्स देखने हैं. दैट्स द टास्क फॉर यू. ओके, 70
and 71. You have to give me its HCF. 23 and 25, 40 and 41, then one more, 49 and say 81. This is example A, B, C and D. I want HCF of all these questions. Come on. Hey, बिना पेन एंड पेपर के HCF, highest common factor. Okay, so think. First number is 1771, second is 23 and 25, C का 40 and 41 and D का 49 and 81. आपको इस नंबर का HCF, highest common factor बताना है बिना पेन एंड पेपर यूज के. नो चीटिंग. You have to think. और आपको पता है अभी आपको क्या सोचना था, मैंने आपको पहले से भी बताया था, सोचना इंपॉर्टेंट है. ये चीजें मैं सिखा नहीं सकती हूँ पर मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ. मैं ऐसे नहीं बोल सकती ऐसे सोचो, बट आई कुड टेल यू द वे. यस, इट कुड बी लाइक दिस. ओके, सो फैक्टर मतलब क्या है? ये नंबर किस टेबल में आते हैं? दोनों नंबर कौन से टेबल में एक साथ आते हैं? कौन से नंबर के टेबल में ये नंबर एक साथ आते हैं वो आपको देगा कॉमन फैक्टर. और उसमें जो सबसे बड़ा बड़े नंबर का टेबल होगा वो आपका होगा HCF. राइट, रिमेम्बर. सो जस्ट राइट. ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, डी का आंसर क्या होगा? लगता है सारी की गाड़ी अटक गई है सबकी. ओके, फाइन. Fold your hands. I don't want to see any answers now. Listen to me. चलिए, एक दो जन ने आंसर दिया मुझे. So I just want to stop. Everybody stop. Now look at it. मैं चाहती हूँ सबसे छोटे नंबर पर. मैंने पहले 70, 71 दिया, मुझे यही देखना था कि आप क्या कर पा रहे हो. Okay, good. I think 1 or 2 are able to understand. Few are, maybe आपके आंसर्स अभी आएंगे. But now you stop, please. Nobody will type. Okay. फिर मैं बात नहीं करूंगी अभी मुझे आंसर मिले तो. So please stop. Okay. मैं चाहती हूँ सबसे छोटे वाले नंबर्स पे है 23 and 25. 23. चलो, शायद आपको पता ना चले कि ये कौन से उसमें आ रहा है. Will you please stop? अब कोई मैसेज टाइप नहीं करेगा. 25 आपको पता है, 5 5s are 25. सबको आता है 5 का टेबल वेरी वेल. 5 का टेबल 5 5s are 25. अच्छा, 5 के टेबल में 23 कहीं पे भी आता है? नो. और 25 आपको पता है सिर्फ 5 के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा. राइट. ओके, 23 5 के टेबल में आता है? नहीं आता. इसका मतलब ये हुआ 23 और 25 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है इसका मतलब सिर्फ 1 कॉमन है. इसका मतलब इसका सिर्फ 1 होता है. सिंपल. गॉट इट? इजी है. व्हाट इज इट? जब दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब वो दोनों एक नंबर के टेबल में नहीं आते, मतलब सिर्फ 1s आते हैं. 123 जा, 125 जा, एंड उसका मतलब ये हुआ कि इन दो नंबर्स का HCF 1 है. लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, 40 and 41. तो 40 का क्या है? 45 के टेबल में आता है. 5 8 जा. So let's factorize quickly. And I know 40 पीछे 0 देखते हो तो मुझे पता है ये 10 के टेबल में आता है. आप भी ऐसे ही सोचना, ठीक है ना? You can try like this. 10 into 4. And what is 10? 2 5s are, everyone knows. And what is 4? 2 2s are, everyone knows. 2 into 2 into 2 into 5. Okay, 41. 41 किसी टेबल में आता है? Yes. Prime numbers. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29. उसके बाद 31 37. उसके बाद डायरेक्टली आपका जाता है 41, अ प्राइम नंबर. तो जब प्राइम नंबर है, जब आपको पता है कि अरे भाई ये तो प्राइम नंबर है, तो नेचुरली कुछ कॉमन मिलने वाला ही नहीं है. और कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, मतलब इसका भी HCF हो गया 1. गॉट इट? अब थर्ड एग्जांपल, 7 7 जा, 81 क्या है? 9 9 जा. कुछ भी कॉमन है? नहीं है. तो आप लिखोगे HCF is 1.
कंफ्यूजन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अब आप देखो, एक और एग्जांपल दे लो क्विकली। 15 एंड 16 का एचसीएफ क्या होगा? 15 एंड 16 का एचसीएफ क्या हो सकता है? क्विकली, बिना बिना कुछ सॉल्व किए 15 एंड 16 का एचसीएफ क्या हो सकता है? 16 और 17 का एचसीएफ क्या हो सकता है? 23 एंड 24 का एचसीएफ क्या हो सकता है? 24 एंड 25 का एचसीएफ क्या हो सकता है? अब आप कोई एग्जांपल देखोगे, 15 16 दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, 16 और 17 में 17 प्राइम नंबर्स है, तो आपको हिंट लग गई होगी जो मैंने कहा। 20 और 25 में 24 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 25 भी कॉम्पोजिट नंबर है। I hope we are together. Okay, there is some problem for my side, so I'm stopping it. I'm just waiting for everything to go smoothly. I hope. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? Yes. So these kind of numbers, when they could be composite number, आपने देखा ये composite number है, पर उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन, उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, दो या उससे ज्यादा नंबर्स हो, ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ओके, और को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होगा? 1। दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व की, 15 और 16 का एचसीएफ 1 है, 16 और 17 का एचसीएफ 1 है, 23 और 24 का एचसीएफ 1 है, 24 और 25 का एचसीएफ 1 है। तो ये नंबर्स का, आई होप अभी आपको आवाज क्लियर हो रही है। आई नो सम इश्यू टुडे, अब शायद थोड़ा सा स्मूथ हो गया मेरे ख्याल से। ओके, इन नंबर्स को आप कौन से नंबर्स कहेंगे? ये जो नंबर्स हैं इसको कौन से नंबर्स कहेंगे? जो 15, 16, 16, 17, 23, 24, 24, 25, 25, 26, ये एक के बाद एक नंबर आते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल वर्ड आपका क्या है? डू यू रिमेंबर? यस, क्या वर्ड है? किसी को याद है क्या कहते हैं? Yes, everyone. See, child, there is a problem, so it's okay. You don't need to go on writing it. It's okay. Leave it, leave it. You have to wait, that's all. And you could repeat the class, and it's a request that you please repeat the class once if there is some issue, please. Okay, you can repeat them. Right now, you understand and ठीक है, बेयर करिए, थोड़े से काम रखिए, अपने माइंड को नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। सो वेट फॉर द क्लैरिटी, और या तो फिर आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो आई कंटिन्यू विद इट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस नंबर्स, again I'm saying that you don't need to repeat continuously and go on writing the things. It will not help me. I can't do anything. Fine. So when we talk about such number, I was talking about these numbers 15, 16, 16, 17 and so on. We call these as, no Darshini, it is called consecutive. जो नंबर्स अपने नंबर्स में जैसे 1 2 3 4 जब हम बोलते हैं और उसमें जब एक के बाद एक आते हैं उसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। हमेशा एक के बाद एक, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, दैट इज 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9, okay, 9 and 10, उसी तरह से 100 and 101, 70 and 71, these are called consecutive numbers। और हमेशा consecutive जो numbers होंगे उनका HCF हमेशा 1 होगा। I hope this is clear to all of you। हमेशा consecutive number का HCF भी 1 होगा, वो हमेशा co-prime numbers होंगे। कोई भी जब इसलिए आपको जैसे किसी ने पूछा what is the HCF of say आप डायरेक्टली कह सकते हो HCF is 1। Fine, I hope this is clear to you। Yes, आइडिया समझ में आया? co-prime numbers जब भी होंगे तो HCF हमेशा 1 होता है, राइट। एंड को-प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं? सारे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है सारे को-प्राइम नंबर्स हैं, और जो को-प्राइम नंबर है उसका HCF 1 है, और या तो HCF 1 है तो आप उसको कहेंगे को-प्राइम। I hope you understood the definition of co-primes। Fine, अब उसके LCM का quick। ओके, और हमेशा याद रखना, ये एक चीज मैं बता देती हूँ, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। I'll take a smaller example quickly within 2 minutes and we wind up the session। Okay,
When we talk about HCF, मैं बहुत छोटे numbers ले लूँ. 2 and 3. What is the HCF? Quickly. 2 and 3. What's the HCF? Yes. 1. Okay. Right. If I say 8 and 9, what's the HCF? Again 1. क्योंकि मैंने क्या बताया, co-prime numbers है और co-prime numbers है, consecutive numbers है, तो हमेशा उनका HCF 1 होगा. और इस केस में इनका LCM क्या होगा? This answer has to be given by you in the next class. आपको observe करना है. मैंने आपको LCM पूछा है और ये आप मुझे बताओगे कि इसका LCM क्या होगा. Fine. ये आपका question है, ये आपके लिए है. I will continue, but I want you to find out LCM without pen and paper, without even factorizing. क्या हो सकता है ये आप बताओ. Fine. So today we have discussed here very small session. I knew it, but मुझे एक ही चीज चाहिए कि चीजों को आप पूरा दिमाग में डाल दो. It has to be oral, absolutely oral. Fine. क्योंकि ये सारी चीजें practical application है. हर रोज हम पेन पेपर लेके नहीं बैठ सकते. Fine. I'll put the attendance here. So kindly means in the WhatsApp group. So kindly put your attendance. Okay. And you're going to answer me this. Fine. So tomorrow we meet at the same time at 9 o'clock. I hope you will be ready with your answer. Right. So you have to go through the textbook. Okay. Bye. Thank you, teacher. Have a nice day.